Now like this we can draw the marginal utility curve for orange. सही परी आमे कमलार सीमांत उपयोगिता आमे अंकन करि परिबा. From the first unit of money he get 10 marginal utility. प्रथम एकक मुद्रारू से केते सीमांत उपयोगिता पाउचंती कमला क्षेत्र रे 10 एवं पंचम एकक से पाउचंती पंचम एकक केते पाउचंती से 4 उपयोगिता पंचम एकक से पाउचंती पुणी 2 उपयोगिता से लाभ करूछंती. पंच ए षष्ठ एकक पाउतिले 2 ए क्षेत्र में पंचम एकक से पाउचंती 2. If we join these 2 points we will get the marginal utility curve. If we join these 2 curves we will get the marginal utility curve of both the goods. Marginal utility curve for orange. Marginal utility curve for orange. यही उभय बिंदु को संयोग कले आमे कमलार सीमांत उपयोगिता पाई परिबा. मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉर ऑरेंज कमलार सीमांत उपयोगिता लाभ करिबा. देन फ्रॉम द फिफ्थ यूनिट पंचम एकक से केते पंचम एकक मुद्रा से केते उपयोगिता लाभ करचंती से क्षेत्र रे 5 एकक 4 एकक से लाभ कर. पंचम एकक से सारणी को देखि पारिबा पिले से 5 एक पंचम एकक मुद्रारू से केते लाभ करचंती 4 एकक मुद्रा से उपयोगिता लाभ करचंती. तेणु एही उभय बिंदु को संयोग कले आमे देखो. नाउ इफ वी जॉइन द from the fifth unit of pool he get marginal utility of 4. से 5 एकक पंचम एकक से सेरु 4 एकक उपयोगिता लाभ करछंती. सही भली ए क्षेत्र रे ऑरेंज क्षेत्र रे से 4 एकक मुद्रारू से केते पाउचंती 4 एकक मुद्रारू 4 एकक मुद्रा बा चतुर्थ से कमलारू से केते उपयोगिता लाभ करूछंती से 4 उपयोगिता लाभ चतुर्थ एकक कमलारू से 4 एकक उपयोगिता लाभ करछंती. फ्रॉम द fourth unit of orange he is getting marginal utility of 4. That means while he is purchasing 5 apple 1 2 3 4 and 5 apple and 4 orange 1 2 3 and 4 orange his marginal utility of both the goods are equal. अर्थात से जेते बेले 5 एकक सेव एवं 4 एकक कमला 1 2 3 4 5 एकक सेव एवं 4 एकक कमला 1 2 3 4 एकक कमला क्रय करछंती. उभय द्रव्यर सीमांत उपयोगिता 4 होई अछि. सारणी को ऊपर देखो टेबुल के देखो से सारणी रे मध्य से 5 एकक सेवरु 4 उपयोगिता लाभ करछंती एवं 4 एकक कमलारू से 4 एकक उपयोगिता लाभ करछंती. तेणु तांकर उपयोगिता सर्वाधिक होई अछि. एटा केते एटा हला 40 आ एटा हला केते एटा हला 28 टोटल केते हला 68 हला. एटा हला 68 से उपयोगिता लाभ करूछंती. ये एरिया रो के वैल्यू केते द वैल्यू ऑफ दिस एरिया इज 68 केते हला देखो 12 ई टोटल एरिया के हम नहीं परवा देखो ई टोटल एरिया ई टोटल ई पूरा इतकी पूरा टोटल एरिया आई टोटल एरिया रो वैल्यू केते एटा टोटल एरिया ई टोटल एरिया रो वैल्यू हैला 68 एवं यह सर्वाधिक उपयोगिता कि नुहे आमे प्रमाण करिवा. नाउ वी विल प्रूव दिस वेदर दिस यूटिलिटी 68 इज मैक्सिमम और नॉट. नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 5 एप्पल इफ ही परचेज 4 एप्पल जदि से 5 एकक सीओ बदल रे 4 एकक से जदि क्रय करंती ताहले कोन होबा पिले. नाउ we have to left this आमे ए शेडेड एरिया को आमे रेखांकित अंश को आमे परित्याग करिया पई पड़िबो. एटा परित्याग से कर देला तार बदल केते पाइला से 5 एकक से 4 एकक कमला बदल से 5 एकक कमला क्रय करिवो. तो से पाइबो केते एटा पाइबो गेन. एटा केते एटा हला गेन GAIN गेन माने लाभ आ एटा कोन लॉस. एटा हला लॉस आ एटा हला गेन. So from the table from the diagram you can see this the loss is more than the gain. ए चित्र को अनुध्यान कले जना पड़े जे
क्षति होतुवा अंश लाभ हेउतुवा अंशरू अधिक होई अछि कारण देख ए लाइन को देख दिस लाइन shows that this area lying under this line, but there are some area which is above this line and this value is 2 because in the table we have already proved that when he is purchasing 5 apple plus 4 orange he is getting 68 utility, but if he purchase 4 apple plus 5 orange he is getting 66 utility. That means से जेते बेले 5 एकक सेव एवं 4 एकक कमला क्रय करथिले से 68 उपयोगिता पाउथिले 68 उपयोगिता पाउथिले किंतु से जेते बेले 4 एकक सेव एवं 5 एकक कमला क्रय कले से केते पाइले 66 ताहेले ए रेखांकित अंशर मूल्य केते 2 डिफरेंस केते 2 होला कि नै सो दैट इज व्हाई एटा काहे कि सर्वाधिक होला नै देखो जे से जेते 5 एकक सेव एवं 4 एकक कमला क्रय करथिले तांकर सीमांत उपयोगिता समान होइतिला किंतु से जेते बेले 4 एकक सेव से क्रय कले तांकर सीमांत उपयोगिता केते होई अछि 6 देखो फ्रॉम द फोर्थ एप्पल he is getting the marginal utility of 6 unit and from the fifth unit of orange he is getting marginal utility of 2. That means से 4 एकक सेव क्रय कले तांकर सीमांत उपयोगिता चतुर्थ एकक रु 6 होइतबा बेले पंचम एकक से कमलारू सीमांत उपयोगिता 2 लाभ करछंती अर्थात उभय द्रव्यरू मिलुतबा सीमांत उपयोगिता परस्पर समान होई नाही. That means when he is purchasing 4 apple and 5 orange his marginal utility are not equal. From the fourth unit of apple he is getting 6 utility, from the fifth unit of orange he is getting 2 utility. That is why in this case the marginal utility of both the goods are not equal. That is why in this law we proved that. So when the marginal utility of both the goods are equal he is getting maximum satisfaction, and in this example we have taken we proved that when he is purchasing 5 apple and 4 orange his marginal utility of both the goods are equal. That is why he is getting maximum satisfaction. This is the explanation of the law. We will discuss the limitations of the law of equimarginal utility. बर्तमान आमे समसीमांत उपयोगिता नियमर सीमाबद्धता गुड़िक आलोचना करिवा. There are some areas where the law of equimarginal utility does not operate. केते गुड़िए क्षेत्र रही अछि जोठारे समसीमांत उपयोगिता नियम कार्यकारी करि न थाए. We have write down the limitations of the law of equimarginal utility. आमे समसीमांत उपयोगिता नियमर आमे सीमाबद्धता गुड़िक एठारे उल्लेख करिछु बा लिखि दिछु. Limitations of the law. First one is utility is a subjective concept. उपयोगिता एक मनोगत अवधारणा अटे, subjective concept. Then मनोगत अवधारणा. Then second one is when the consumer is not rational. उपभोक्ता जने विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति होई नथिले, not rational or irrational. Then third one is indivisible goods बा अविभाज्य द्रव्य. Then last one is free good, मुक्त द्रव्य. So in these 4 cases the law of equimarginal utility does not operate. So we will discuss the first one. Utility is a subjective concept. In the previous law, that is the law of diminishing marginal utility, we have already discussed utility when in reality utility is a subjective concept. आमे क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम आलोचना करथिले जे उपयोगिता एक मनोगत अवधारणा अटे. वास्तव जीवन रे उपयोगिता को संख्या रे परिमाप करिवा संभवपर नुहे. That means in reality it is not possible to measure the utility derived from the consumption of different goods. But in this law we have taken the utility as measurable in numbers. किंतु एही नियम रे आमे उपयोगिता को संख्या रे परिमाप योग्य बोली नै अछु. किंतु आमे आम वास्तव जीवन रे उपयोगिता को संख्या रे परिमाप करि परिबा नाही. In this law we have assumed utility is measurable in numbers.
how much utility an individual will derive can be measurable in numbers, but in reality it is not so. An individual cannot measure, cannot calculate, cannot imagine the utility derived from the consumption of the good in numbers. That is why when we are unable to measure the utility, calculate the utility of a good consumed, then this law cannot operate. जदि आमे कौनसी द्रव्यर उपभोगु आमे मिलुवा उपयोगिता को संख्यारे परिप्रकाश करि परिबा नाही, ताहेले एही नियम कार्यकारी करिवो नाही। कारण आमे एही नियम रे आमे उल्लेख करिछु जे जेतेबेले उपभोक्त द्रव्य गुड़िकर मिलुवा उपयोगिता परस्पर समान होइताय सेही समय उपभोक्ता सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करती। In this law we have make the statement that when the utility derived from all the goods consumed are equal, by that time the consumer will get maximum satisfaction. But when we are not able to calculate the utility in numbers, how can we equate the marginal utility of all the goods we have consumed? That is why this law will not operate in case of utility as a subjective concept. So एही नियम कार्यकारी करन थाए क्यों क्षेत्र रे उपयोगिता एक मनोगत अवधारणा होइथिबा। 2 नंबर, when the consumer is not rational, और उपभोक्ता जने स्वाभाविक व्यक्ति बा विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति होई नथिले एही नियम कार्यकारी करि न थाए। Because a rational person is able, rational, what is rational and irrational? आमे कहा को आमे विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति कहवा एवं कहा को आमे अस्वाभाविक व्यक्ति कहवा। जे जो व्यक्ति बजार को जाई से क्यों द्रव्यरू केते उपयोगिता पाउछंती से विषय तांकर सविशेष ज्ञान थिबो, तांको आमे स्वाभाविक व्यक्ति बोली कहवा। एवं से सब बेले द्रव्य गुड़िकर मिलुवा उपयोगिता को सर्वाधिक करने चेष्टा करुवे तांको आमे स्वाभाविक व्यक्ति बोली कहवा। That means an individual is called a rational person when he goes to the market to maximize his satisfaction. तांकर से उपयोगिता को मैक्सिमाइज करने चाहूवे, सर्वाधिक करने चाहूवे। से जहाँ टंका खर्च करुवे, जहाँ टंका से द्रव्यर क्रय पाई खर्च करुवे, सही टंकारु से सर्वदा सर्वाधिक उपयोगिता लाभ करने चेष्टा करुवे, ताहेले तांको आमे स्वाभाविक व्यक्ति बा रेशनल पर्सन बोली कहबा। That means when an individual is called a rational person when he is interested in getting maximum satisfaction whatever he spent. But if a person is unable to calculate the utility, or if a person is not aware about the money he spent for the good, by that time he is called a irrational person. जदि जने व्यक्ति से केते टंका खर्च करूछंती, सेथिरु से केते उपयोगिता पाउछंती, से विषय रे तांकर जदि सविशेष ज्ञान नथिबो, से ठीक भाबरे आकलन करि पारु नथिबे, ताको आमे अस्वाभाविक व्यक्ति बोली कहबा। तेणु जने अस्वाभाविक व्यक्ति विभिन्न द्रव्यरू मिलुवा उपयोगिता को ठीक भावरे समान करि पारिबे नाही। That is why a irrational person, when a person is not rational, he is unable to equate, he is unable to compare the marginal utility derived from different goods, so that he is not able to equate the marginal utility of different goods. तेणु जने अस्वाभाविक व्यक्ति विभिन्न द्रव्यरू केते उपयोगिता पाउछंती, से उपयोगिता को किभली भाव से समान करिवे जद्वारा से सर्वाधिक उपयोगिता लाभ करिवे, से बाबद से ठीक भाव जानी पारंती नाही। तेणु एही नियम अस्वाभाविक व्यक्ति बा व्यक्ति विशेष जदि विचार बुद्धि संपन्न व्यक्ति होई नथिबे ताहेले कार्यकारी करि न थाए। देन थर्ड वन, indivisible goods. This law is not operational in case of indivisible goods. There are two type of goods. अविभाज्य, एही नियम एही indivisible goods माने अविभाज्य द्रव्य, एही नियम अविभाज्य द्रव्य क्षेत्र रे कार्यकारी करि न थाए। There are two type of goods, divisible and indivisible. Divisible आमे प्रथम आमे divisible कोन और indivisible कोन आमे प्रथम बुझिबा। First we will try to know what is divisible goods and what is indivisible goods. Divisible
divisible goods. ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ କହିଦେଉଛି, those goods whose utility is destroyed, those goods whose utility is not destroyed are called divisible goods. Those goods whose utility is not destroyed are called divisible goods. ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଭାଜନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଯୋଗିତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. That means the utility is intact still after division. अर्थात उपयोगिता तार विभाजन सत्वे मध्य तार उपयोगिता नष्ट होई न थाए ताहाको आमे विभाज्य द्रव्य बोली कहि थाउ. फॉर एग्जांपल apple is a divisible goods because even if we divide the apple, still then the the utility of the apple remains the same. डिविजिबल बा विभाज्य द्रव्यर उदाहरण के लिए होचे सेव. सेवर विभाजन हेले मध्य सेव को आमे भाग भाग कले मध्य सेवर उपयोगिता नष्ट होई न थाए. सेवर उपयोगिता सर्वदा सही समान रही थाए. विभाजन हेले मध्य आमे ताहाको सेव बोली कहि थाउ. तेणु यह एक विभाज्य द्रव्य अटे. बट इन केस ऑफ इंडिविजिबल गुड्स आमे काहाको आमे इंडिविजिबल गुड्स बोली कहवा. इंडिविजिबल गुड्स indivisible goods, those goods whose utility is destroyed after division are called indivisible goods. ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ ହେଲେ ତାର ଉପଯୋଗିତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. for example TV, mobile, then cycle, etc. These goods are called TV, mobile, cycle. These goods are called indivisible goods. Because when we divide the TV, the utility of the TV is destroyed. TV is now divided into a wire, then a plastic cover, a picture tube, etc. And when we divide the cycle is divided into different pieces and these pieces cannot be called as cycle. आमे साइकेल रो विभाजन कले साइकेल केते गुडी खंडर विभक्त हो जाए एवं सेही खंड गुडी को आमे साइकेल बोली कहिबा नाही बा साइकेल रो उपयोगिता सेही खंडरे रही न थाए. से खंड गुडी को चक्क हो जाए, टायर हो जाए, बा से सीट हो जाए, सीट कवर हो जाए इत्यादि. That means when the cycle is divided into different pieces, it may be seat or seat cover or tire or tube or the wheel, etc. So these cannot be called a cycle. But when we assemble these pieces, it is called cycle. That is why cycle को विभाजन कले cycle रो उपयोगिता नष्ट हो जाउछि. तेणु याकू अविभाज्य द्रव्य बोली कहा जाए. So this law says that the law is not applicable in case of indivisible goods. Indivisible अविभाज्य द्रव्य क्षेत्र रे एही नियम कार्यकारी करि न थाए. अविभाज्य द्रव्य, that means when we are comparing a smaller good and a larger good, by that time this law is not applicable. When we are comparing apple and we are comparing cycle, suppose an individual goes to the market to purchase a cycle and apple. जदि जने व्यक्ति बाजार को सेव किनिया पई दुईटी द्रव्य किनिछंती, से सेव एवं साइकेल किनिछंती. तेणु ए क्षेत्र रे आमे उपयोगिता को आमे तुलना करि परिबा नाही. So when a person purchase two things, one is divisible goods and other is indivisible goods. For example, apple and cycle, we cannot compare the marginal utility of these two goods because apple is a divisible goods. We can divide the apple in different pieces. But in case of cycle, we cannot divide cycle into different pieces. That is why
हाउ कैन वी कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ दिस टू गुड्स तेणु यही दुईटी द्रव्यर उपयोगिता को तुलना करने संभवपर हो न थाए तेणु से अविभाज्य द्रव्य क्षेत्र में यही नियम कार्यकारी कर न थाए दैट इज व्हाई इन केस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स द लॉ डज नॉट ऑपरेट एंड लास्ट वन इज फ्री गुड्स मुक्त द्रव्य दिस लॉ इज आल्सो नॉट ऑपरेशनल इन केस ऑफ फ्री गुड मुक्त द्रव्य क्षेत्र में मध्य यही नियम कार्यकारी कर न थाए मुक्त द्रव्य आमे पढ़ीचु पिले प्रथम माने आमे चैप्टर पढ़ीचु इन द फर्स्ट चैप्टर we have already discussed the goods and different type of goods free good economic good so free good means those goods for which we need not require to pay any price मुक्त द्रव्य क्या कहवा पिले जो द्रव्य को पाइबा को हेले आमको कौनसी पावना देवा को पड़ी न थाए बट हियर इन दिस लॉ वी कंपेयर द मार्जिनल यूटिलिटी विथ द प्राइस किंतु एही नियम रे आमे कोन करिचे जे गोटे द्रव्य मिलुवा उपयोगिता को उक्त द्रव्यर दर द्वारा आमे तुलना करिथाउ वी कंपेयर द मार्जिनल यूटिलिटी विथ द प्राइस दैट इज व्हाई व्हेन इन केस ऑफ फ्री गुड मुक्त द्रव्य क्षेत्र रे पिले कोन होची एज वी नीड नॉट रिक्वायर टू पे एनीथिंग आमे सेही द्रव्य पाइबा को हेले फॉर एग्जांपल एयर वाटर sunshine we need not require to pay anything आमे ए द्रव्य पाइबा को हेले हमको कोनसी पावना देवा को पड़ी न थाए दैट इज व्हाई हाउ कैन वी कंपेयर द मार्जिनल यूटिलिटी विथ द प्राइस तेणु आमे यदि कोनसी द्रव्य पई पावना न देले पैसा खर्च न कले आमे तार उपयोगिता को आमे दर सहित किभली भाबरे तुलना करिवा दर को उपयोगिता को से द्रव्य मिलुवा उपयोगिता को बा सूर्य किरण रु केते उपयोगिता मिलला आमे दर सहित तुलना करि परिबा नाही तेणु मुक्त द्रव्य क्षेत्र रे मध्य एही नियम कार्यकारी करि न थाई दिस इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी